Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and in this video we are covering the topic autopsy. So let's start with the definition of autopsy. So autopsy is also called as or also known as necropsy, postmortem examination. So postmortem word बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आपने अपनी लाइफ में कई बार ये वर्ड सुना होगा. अटॉप्सी, नेक्रोप्सी, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ये सारे वर्ड एक ही मीन करते हैं. इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हो. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डाइसेक्शन एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी. ठीक है, डेड बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं, देन एग्जामिनेशन करते हैं, ऑर्गन्स की एग्जामिनेशन करते हैं, एंड वी लुक अप टू द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ दैट डेड बॉडी. ठीक है, अब अटॉप्सी करते क्यों है, क्यों ज़रूरी है अटॉप्सी करना, वाई वी नीड अटॉप्सी. सो अटॉप्सी में बी परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन कॉज ऑफ डेथ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रियल कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन करने के लिए अटॉप्सी या पोस्टमार्टम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और हमें क्या करना है, ये भी देखना है कि डिजीज़ का क्या इफ़ेक्ट है. हमें ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ अ डिजीज़ एंड टू इस्टेब्लिश द इवोल्यूशन एंड मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ प्रोसेस. अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ थी, हो सकती है वो लॉन्ग टर्म डिजीज़ हो सकता है कोई शॉर्ट टर्म शॉक हो या फिर हार्ट अटैक हो या कोई भी और रीज़न हो सकता है, इसके प्रोसेस को भी समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म अटॉप्सी या फिर पोस्टमार्टम. द वर्ड अटॉप्सी इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉल्ड ऑटोप्सिया. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो वर्ड है अटॉप्सी वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नेम अटॉप्सिया विच मीन्स द एक्ट ऑफ सीइंग फॉर ओन सेल्फ. ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस में बॉडी को डाइसेक्ट करके एग्जामिनेशन किया जाता है एंड ऑब्जर्व किया जाता है, ध्यान से चीज़ों को देखा जाता है इनसाइड द बॉडी. इस वजह से इसे हम कहते हैं अटॉप्सी. अटॉप्सिया इज अ वर्ड फॉर द एक्ट ऑफ सीइंग फॉर ओन सेल्फ. ओके, व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ अटॉप्सी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ अटॉप्सी. एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें. दिस PDF आई विल शेयर इन आर टेलीग्राम ग्रुप. टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो. ओके, सो PDF विल बी देयर. हिस्ट्री ऑफ अटॉप्सी. हिस्ट्री ऑफ अटॉप्सी कहाँ से शुरू होती है. द अर्ली इजिप्शियंस डिड नॉट स्टडी द डेड ह्यूमन बॉडी फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ डिजीज़ और डेथ. जो इजिप्ट में होते थे ना, वो किसी डिजीज़ को समझने के लिए या फिर डेथ क्यों हुई इसको एक्सप्लेन करने के लिए अटॉप्सी नहीं करते थे. वो कुछ ऑर्गन्स को प्रिजर्व करने के लिए, रिमूव करने के लिए अटॉप्सीज किया करते थे. बट वहाँ से परफॉर्म हो रही है, बॉडी का डिसेक्शन तब से हो रहा है. अर्ली इजिप्शियंस जो थे वो इसे प्रैक्टिस किया करते थे. द ग्रीक्स एंड इंडियंस क्रिमेटेड देयर डेड बॉडीज विदाउट एग्जामिनेशन. जो अर्ली ग्रीक पीपल थे, जो इंडियंस थे, वो उनके यहाँ जितनी भी डेड बॉडीज होती थी उसको क्रिमेट कर देते थे. द रोमन्स, चाइनीज एंड मुस्लिम्स ऑल हैड टैबूज अबाउट ओपनिंग द बॉडी एंड ह्यूमन डिसेक्शंस वेर नॉट परमिटेड ड्यूरिंग द मिडिल एजेस. तो मिडिल एज तक ह्यूमन बॉडी को ओपन करना परमिट ही नहीं था इन कुछ ग्रुप्स में, जैसे कि रोमन्स, चाइनीज एंड मुस्लिम्स. इसमें अलाउड नहीं था कि बॉडी कट ओपन करी जाए. ग्रीक्स और इंडियंस तो अपने यहाँ की डेड बॉडीज को जला देते थे. इवन अभी भी ये चीज़ें प्रैक्टिस करी जाती है इन इंडिया. ओके, क्रिमेशन प्रैक्टिस करी जाती है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ओके, द फर्स्ट रियल dissection for the study of disease were carried out about 300 BCE by Alexandrian physician Herophilus and Erastatus. ठीक है, इन्होंने सबने मिल के ही ऐसे कुछ एविडेंसेस है जिससे हम ये मानते हैं कि 300 BCE में फर्स्ट रियल डिसेक्शन हुई थी. ऑल द नेम्स आर वेरी complicated for me. My I'm so sorry for that if I am, expelling few words wrong. Sorry for that. But it was okay. Next line. But it was Greek physician Galen, ठीक है, in the late 2nd century CE who was first to correlate the patient syndrome. ये वो पहले पर्सन थे जिन्होंने पेशेंट के सिंड्रोम को, जो वो कंप्लेन कर रहा था, एंड साइंस व्हाट कैन बी सीन एंड फेल्ट, ठीक है, विथ वॉट वॉज फाउंड अपॉन द एग्जामिनेशन अफेक्टेड पार्ट ऑफ द डिजीज. तो ये जो पर्सन थे उन्होंने इन चीज़ों को कोरिलेट करा. पेशेंट्स के सिम्टम क्या है जो वो कंप्लेन कर रहा है, और क्या वो फील कर रहा है, और क्या हमें देखने को मिल रहा है, इन सभी चीज़ों को कोरिलेट करा था और उस अफेक्टेड पार्ट को ऑब्जर्व करा था जिसमें प्रॉब्लम आई थी.
This was a significant advance that eventually led to the autopsy and broke an ancient barrier to progress in medicine. ठीक है, यहाँ से एक बैरियर क्या हुआ, हट गया, और यहाँ से ऑटोप्सीज होनी शुरू हुई फिर धीरे धीरे. इट वॉज द रीबर्थ ऑफ अनोटमी. इस प्रोसेस को या इस पॉइंट पे हम कहते हैं कि इट वॉज द रीबर्थ ऑफ अनोटमी ड्यूरिंग रेनेसेंस. During the Renaissance, an exemplified work of Andres Versailles De Humani Corporis Fabrica 1543 में publish हुआ, that made it possible to distinguish abnormal from the normal anatomy. ठीक है, ये एक वर्क था एंड्रिस का जो पब्लिश हुआ था 1543 में, जिसमें ये बताया गया हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल एनाटॉमी एंड एबनॉर्मल एनाटॉमी. ठीक है. Leonardo da Vinci dissected 30 corpus and noted abnormal anatomy. So उन्होंने 30 bodies को dissect करा और उसमें observe करा कि क्या abnormal anatomy थी जिसकी वजह से उन लोगों की death हुई. ठीक है. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें यहाँ देखनी है. फॉर एग्जाम्पल, डे ह्यूमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका, इट वॉज द लैटिन टाइटल विच इज़ ट्रांसलेटेड टू ऑन द फैब्रिक ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इसको जब आप ट्रांसलेट करोगे तो इट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू on the fabric of the human body in English. This work is a significant anatomical text which is written by Andres Versailles, a Belgian physician and anatomist. The full title of the book is De Humani Corporis Fabrica, Libri Septem on the Fabric of Human Body in 7 books. The book was first published in 1943 and it was considered the groundbreaking work in the history of anatomy. तो ये बहुत important एक event था हिस्ट्री में, anatomy की हिस्ट्री में. इसके अलावा यहाँ पे एक मेंशन हुआ है अब नॉर्मल एनाटॉमी और नॉर्मल एनाटॉमी के डिस्टिंग्विशन के बीच में दैट एन्यूरिज्म. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल एनाटॉमी है, एब नॉर्मल एनाटॉमी को यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया गया है विद एन्यूरिज्म. हम ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट इज दैट. इट इज़ अ पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द लोकलाइज्ड abnormal dilation of a blood vessel. This dilation can occur in arteries or veins, but it is more common in arteries. Aneurysm can develop in various parts of the body, such as brain, aorta, abdomen, or peripheral arteries. The severity of an aneurysm and potential complications depend on its size, location, and the health of the affected blood vessel. So इसके 4 अलग अलग types है. Here we have aortic aneurysm. इसमें क्या होता है, जो aorta है, it occurs in the aorta, the largest artery in the body. Aortic aneurysm can be located in the chest. ठीक है, that is also known as thoracic aortic aneurysm or abdomen, that is abdominal aortic aneurysm. ठीक है, this is the one type. Then we have cerebral aneurysm. As the name suggests, it happens in the brain. It is also known as brain aneurysm. This type occurs in the blood vessel of the brain. It poses a risk of rupture which can lead to potentially life-threatening condition known as a subarachnoid hemorrhage. Third, we have peripheral aneurysm. This can also occur in peripheral arteries such as those in the legs or arms. Then we have visceral aneurysm. Visceral aneurysm that involve the arteries that supplies organs like that in this arteries supplying organs like spleen is a supplying organ, liver and kidneys. These are few types of aneurysm. It is an example of abnormal anatomy. Abnormal anatomy. Okay, let's move forward. Earlier in the 13th century, Frederick II ordered that the bodies of 2 executed criminals, तो तब 2 executed criminals थे जिनकी body deliver करी थी एग्जामिनेशन के लिए. सो जो फ्रेडरिक II थे उन्होंने ऑर्डर करा दैट 2 executed criminal will be delivered every 2 year to the medical schools, one of which was Salerno for an anatomical publicia which every physician was obliged to attend. ठीक है, हर एक physician को वो अटेंड करना ही था. हर 2 साल में 2 executed criminals की बॉडी मेडिकल स्कूल भेजी जाती थी
to examine the anatomy and to understand the anatomy. The first forensic and legal anatomy wherein the death was investigated to be determined presence of fault is said to have been on request by the magistrate in Bologna in 1302. So this was the first death investigation with the help of autopsy or dissection, we can say. Next, we have Antonio, a 15th century Florentine physician, carried out 15 autopsies explicitly to determine the cause of death. तो इन्होंने 15 autopsies करी थी specifically to define and determine cause of death, and significantly correlated some of his findings with prior symptoms in deceased people. Okay, then we have Theophile Bonnet of Geneva. He he made the literature to observe, which is made in 3000 autopsies. Many specific clinical and pathological entities were then defined by various observers, thus opening the door to modern practice. बहुत important step था ये भी. He came of age with Giovanni. He was the father of modern pathology, important, who in 1761 described what could be seen in the body with the naked eye. Okay, in his voluminous book on the seats and cause of disease as investigated by anatomy, and he compared the symptoms and observation in some 700 patients with anatomical findings upon examining their bodies, which was huge. Thus the work of the study of the patient replaced the study of books and comparison. Carl von Rokitansky of Vienna, the gross, that is naked eye autopsy, reached its peak. He utilizes the microscope of every little and was limited by his own humoral theory. Now, what is humoral theory? The humoral theory, which was dated back to ancient Greece, they said that body is governed by four humors. First is blood, phlegm, black bile, and yellow bile. An imbalance among these humors were believed to be cause of some disease. So it was limited to humoral theory only. The French anatomist and physiologist Mary F. Bish stressed to the role of different generalized systems and tissues in the study of disease. It was the German pathologist Rudolf Virchow, however, who introduced the cellular doctrine, and he was also a person involved to give cell theory, I guess, if you remember. The changes in the cells are the basis of the understanding of the disease. He said that everything lies in the cell, in pathology and in autopsy also. He warned against the doctrine of pathologic anatomy, the study of structure and diseased tissue alone, such as stressed that the future of pathology would be physiologic pathology, study of the functioning of the organism in the investigation of disease. And he was right somehow. The modern autopsy has been expanded to include the application to all knowledge and all of the instrument of the specialized modern basis of sciences. Yes, so आज की date में we have a lot of modern techniques and informations related to autopsy. It was very, developed right now. The examination has been extended to structure too small to be seen except with electron microscope, and to molecular biology to include all that can be seen as, and what still remains unseen. So this was a brief history of autopsy also, and basic brief definition of autopsy. In upcoming videos we will see types of autopsy process, the important elements involved in autopsy. So thank you so much for watching this video. Stay tuned for more such videos. Subscribe our channel. It will be a big support. If you want this PDF, it will be available in our Telegram group. Link is in the description. I will again say subscribe our channel. Thank you so much for watching. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.